क्या किए थे? We have seen that charged particle is projected at an angle 0 degree with a magnetic field. Magnetic field को charged particle 0 में throw किए थे at an angle of what? 180 degree throw किए थे, 180 degree throw किए थे at an angle of 90 degree भी throw किए थे. V is perpendicular to the magnetic field, ऐसे throw किए थे. And when it is throwing like this, what? It just move in a circular path. तीन cases देखे थे and circular path में R is equal mv by qb देखे थे and thereby R is directly proportional to V. On increasing velocity, radius also increases. There we have calculated that what? Time period and frequency. Now at any angle I have to project here. Write down case 4. Case 4 is different case. Write down case 4. Case 4. Let the charged particle is projected at any angle theta. Write down let the charged particle is projected at any angle theta. At any angle theta means what? This is what the magnetic field direction. This is x-axis and this is what y-axis and this is what z-axis. So what will happen? Magnetic field is along x-axis. This is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Uniform magnetic field I am taking here, and the charged particle is projected what? At any angle theta to the magnetic field. This is what the uniform magnetic field. Try to understand this. Uniform magnetic field means equal spacing. Just like your uniform electric field, equal spacing should be there. And this is what here I am getting magnetic field B. This is x-axis. This is what? Y-axis, and this is what? Z-axis. Now I am projecting a charged particle what? At any angle theta to the magnetic field. At any angle theta means I am just projecting along this line. I am projecting along this line. Just I am projecting like this. Then what will happen? This is what? Velocity V. By V velocity I am projecting and it makes theta angle to the what? Magnetic field. So I can resolve V into two components. This component is what? V cos theta. This component is V cos theta and this component is V sin theta. Try to understand this. V cos theta is along horizontal direction and that is towards the magnetic field. So due to V cos theta, V cos theta remains constant and it moves in a straight path like this. Clear? And V cos theta is along the direction of magnetic field. Therefore, when velocity is along the direction of magnetic field, that will move in a straight line because force is 0. Now V sin theta is perpendicular to the magnetic field. You see, perpendicular to the magnetic field. If velocity is perpendicular to the magnetic field, then it will move in a circular path. Understand this? Then it will move in a circular path. Now the charged particle is what? The charged particle possesses both the velocity or both the direction, that is both the motion, that is straight line motion as well as circular motion. That means how the charged particle will move. It has to move in a straight line as well as in a circular path. Means the charged particle will move in an helical path, just like this. This is the helical path. Helical path means it will move in a spiral or helical path because it possesses straight line motion as well as what? As well as what? Circular motion. It possesses both the motion. Therefore, it will move in a helical path. Clear? Or what? Helical path or spiral path. Why spiral path? Due to V cos theta, it has to move in a straight line. Due to V sin theta, which is perpendicular to the magnetic field, it has to move in a circular path. तो सर्कल भी जाना है, स्ट्रेट भी जाना है. मतलब कैसे जाना है ये कैसे जाएगा? हेलिकल पाथ में जाएगा. दिस इज व्हाट? मूविंग इन एन हेलिकल पाथ और व्हाट? स्पाइरल पाथ. जैसे स्पाइरल बाइंडिंग हो रहा है, स्पाइरल बाइंडिंग देखा है ना, वो स्ट्रेट भी जा रहा है व्हाट एंड सर्कुलर पाथ में भी जा रहा है. दैट इज मूविंग इन ए हेलिकल पाथ. ड्रॉ करो. किसका डाउट है इसमें? बोलो. एनी डाउट? अरे एनी डाउट? नो. ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉ दिस डायग्राम. हाँ बोलो बोलो. रिपीट कर दीजिए. ओके देखो देखो केस 4 है. व्हाट? द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड. लिखो केस 4. द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड. The charged particle is projected at any angle theta to the magnetic field.
देखो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाह, मैंने v चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी में बाय मेकिंग एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। तो v कैन बी टू द हॉरिजॉन्टल और टू द मैग्नेटिक फील्ड, v कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये आएगा v cos थीटा, ये आएगा v sin थीटा। v cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट, हाँ बोलो, सर अरे बोलो। थोड़ा वो बोलो। एक्स वाई जेड क्या हुए वो यहाँ पर। अरे जल्दी आ जाओ थोड़ा, 3 बजे हुआ। ओके देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, वाई एक्सिस मैंने ऐसे लिया एंड जेड एक्सिस लिया, समझ में आया? बट यस सर एक्स ठीक है एक्सिस में ठीक मैग्नेटिक है फील्ड सर। है, हुआ। एंड v इज द चार्ज पार्टिकल, v में प्रोजेक्ट किया with an angle theta to the horizontal. I can resolve v into two component, this component is v cos theta and this component is v sin theta. v cos theta is along the direction of magnetic field, therefore due to v cos theta the charge particle is moving in a straight line, and v sin theta is perpendicular to the magnetic field. Due to v sin theta the charge particle has to move in a circular path, देखे थे केस 3। therefore now the charge particle is moving along horizontal as well as circular path, means what, the charge particle will move in a spiral path or helical path, ऐसे spiral path में जाएगा। समझ में आया सभी को? अरे सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, नाउ राइट डाउन, लिखो, लेट ए चार्ज पार्टिकल q is projected, let a charge particle q is projected by making an angle theta, by making an angle theta to the magnetic field, by making an angle theta to the magnetic field. On resolving v into two components, on resolving v into two components, on resolving v into two components, bit 1 v cos theta along the direction of magnetic field, v cos theta along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, due to which the charge particle is moving in a straight path, due to which the charge particle is moving in a straight path, in a straight path, bit 2 v sin theta perpendicular to the magnetic field, v sin theta perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, due to which the charge particle is moving in a circular path, due to which the charge particle is moving in a circular path, circular path, लिखा, circular path. Now in another paragraph write down, due to both the components of the velocity, due to Sir, both, wait 1 minute. okay, So completed. charge particle is moving in a circular path. Circular path. Now in another paragraph write down, due to both the components of the velocity, due to both the components of the velocity, the charge particle is moving in a spiral path, in a spiral path or helical path, or helical path, spiral path or helical path,
spiral path of helical path. Understand this? Now spiral path जो है circular path जो है उसी का radius निकालेंगे. Now write down radius of the circular path. How to calculate? Write down radius of circular path. I have to find out. You see, circular path is for which component of the velocity? A circular path is for which component sin of the velocity? Yes, v. What? Sin theta. V sin theta. V sin theta is responsible for circular path. Write down. As V sin theta is responsible for circular path, as V sin theta is responsible for circular path, V sin theta is responsible for circular path. Therefore, the centripetal force is given. Therefore, the magnetic force is given by Fm is equal. Therefore, the magnetic force is given by Fm is equal QB. B के बदले क्या लिखेंगे? B sin theta. अरे sin theta responsible into B. B sin theta and B के बीच में क्या है? Angle 90 degree sin 90. Do you follow this or not? QB sin theta into B into sin 90. Sin 90 क्यों लिखा? Because the angle between V sin theta, angle between V sin theta and B is 90 degree, for which the charged particle is moving in a circular path. Clear हुआ statement? अरे ये statement clear हुआ कि नहीं? Yes, sir. Now समझ में? हेलो, हाँ बोलो, कौन पूछ रहा था? हो गया? Okay. Now Fm is equal, that is what, QV sin theta into B. Write down. हो गया? Now this magnetic force gives the necessary centripetal force. Write down. This magnetic force gives the necessary centripetal force. Write down. This magnetic force gives the necessary centripetal force. Therefore, Fm is equal Fc. Fm है QB sin theta into B, and Fc is your centripetal force क्या है? mv square by r. V मतलब यहीं पे क्या है? V sin theta. mv square by r. R is the radius I have to calculate. Is that clear? R is the radius I have to calculate. लिखो. R is the radius I have to calculate. हो गया? Yes, sir. Understand this? Now you see V sin theta and this one is getting cancels out. So what you're getting? R radius is R is equal what? mv sin theta divided by QB. This is what the radius of helical path. ये जो रेडियस देख रहे हो, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ जो देख रहे हो, ये हेलिकल पाथ का रेडियस ये है, ये इसका रेडियस है r. ये रेडियस देख रहे हो r, ये हेलिकल पाथ का रेडियस आ रहा है मेरा mv sin theta by QB. I am getting mv sin theta by QB. That is the radius of helical path. Write down. This is the radius of helical path. तो टाइम पीरियड निकालेंगे. Time period of the charged particle, because it is moving in a circular path. As it is moving in a circular path, its time period also you have to calculate. Write down. Time period of the charged particle. Time period of charged particle. Time period of charged particle. What is the time period? Time period T is a circumference by velocity. Velocity मतलब क्या है यहाँ पे? V sin theta. अरे circumference by velocity. Circumference by velocity. Velocity means V sin theta. For circular path, velocity is responsible. Which velocity? V sin theta. Now put here 2 pi r. R is mv sin theta by QB divided by 1 by V sin theta. So कितना रहे? V sin theta getting cancels out, and we are going to get time period is same as the time period in a circular path. 2 pi m by QB. Look here, it is independent of velocity. जो मेरा थर्ड केस में निकला था टाइम पीरियड, वही सेम टाइम पीरियड निकला व्हाट? हेलिकल पाथ में. अरे समझ में आ रहा है? अरे इतना टाइम पीरियड निकला था ना थर्ड केस में, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन व्हाट?
in circular path. When the charge particle is moving in a circular path, what is the time period? The time period t is a 2 pi m by qb. Same ही आया because v sin theta getting Yes. cancels out here. It is independent of velocity. In a helical path also, the time period is independent of the velocity. अरे हेलिकल पाथ में भी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे थर्ड केस में हमने देखा हुआ। लिख दिया, कंप्लीटेड दिस वन। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी का? नो सर। नो, आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो, नाउ पीच ऑफ हेलिक्स क्या है? राइट डाउन पीच ऑफ हेलिक्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर आया, पीच ऑफ हेलिक्स, PITCH, पीच ऑफ हेलिक्स। पीच ऑफ हेलिक्स क्या है? पीच ऑफ हेलिक्स इज व्हाट? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल। सोचो यहीं पे चार्ज पार्टिकल है, एक टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? यहीं पे आके यहीं पे पहुंचेगा। अगर यहीं पे चार्ज पार्टिकल है, एक टाइम पीरियड में यहीं पे पहुंचेगा। अगर यहीं पे है तो एक टाइम पीरियड में यहीं पे पहुंचेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज पीच ऑफ हेलिक्स। तो अगर यहीं से कैलकुलेट कर रहे हो यहीं तक पहुंच रहे हैं तो दिस इज द पीच ऑफ हेलिक्स। ये देख रहे हो यहीं पे कैलकुलेट कर रहे तो पीच ऑफ हेलिक्स। यहीं से निकाल रहे हो तो यहीं पे आ रहे हैं वन टाइम पीरियड में, ये पीच ऑफ हेलिक्स है। समझ में? पीच ऑफ हेलिक्स मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल, दैट इज नोन एज पीच ऑफ हेलिक्स। पीच ऑफ हेलिक्स लिखो। पीच ऑफ हेलिक्स का डेफिनेशन, पीच ऑफ हेलिक्स, पीच ऑफ हेलिक्स का डेफिनेशन क्या है? देखो, पीच ऑफ हेलिक्स, राइट डाउन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय, this is the horizontal distance traveled by the charged particle. This is the horizontal distance traveled by the charged particle in one time period. This is the horizontal distance traveled by the charged particle in one time period. In one time period. Clear? That is the pitch of helix. So what is pitch of helix here? देखो, therefore pitch of helix is equal how much? Pitch of helix horizontal distance मतलब क्या? horizontal speed into time. horizontal speed क्या है? v cos theta into time. तो pitch of helix है v cos theta into time. This is what 2 pi m by qb. That is what pitch of helix. Pitch of helix is what? v cos theta into 2 pi m by qb. Clear? अरे समझ में है? सर फॉर्मूला इज v into t. v into t, velocity into t, horizontal velocity into time. horizontal velocity मतलब क्या है? v cos theta ना। अरे horizontal velocity कितना है इसका? यहीं पे horizontal velocity क्या है? v cos theta ना। v cos theta into t। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? किसका डाउट है बोलो ये क्वेश्चन में? एनी डाउट? अरे डाउट नहीं है? हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट है सर pitch of helix is distance. Yes. yes, horizontal distance traveled by the charge particle, that is known as pitch of helix. Pitch of helix is the horizontal distance traveled by the charge particle. Is that clear? Understand this? Next. Yes sir. Yes sir. Next is your Lorentz force. What is that? ये चार केस खत्म हो गया। वाह, तो थीटा 0 डिग्री में फेंका गया, थीटा 180 में फेंका गया, थीटा कितने में? 90 में फेंका गया, थीटा एनी एंगल फेंका गया। समझ में? एंड सभी में निकाले मैग्नेटिक फोर्सेस हाउ मच। क्लियर? समझ में? नाउ नेक्स्ट इज अ लॉरेंस फोर्स. व्हाट इज दैट? राइट डाउन लॉरेंस फोर्स. What is that Lorentz force? Let's see this. Lorentz force is what? When a charged particle is moving under the simultaneous effect of electric and magnetic field. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। दोनों में एक चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया तो दो फोर्स मिलेगा। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिलेगा, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिलेगा, दूसरा क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिलेगा। द सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक व्हाट? The sum total of electric and magnetic force is known as Lorentz force. Lorentz force is nothing but
The sum total of electric force as well as magnetic force on the charged particle is known as Lorentz force. लिखो, एक एक करके लिखो. Lorentz force क्या है? Whenever a charged particle is moving, write down. Whenever a charged particle is moving under the simultaneous effect of, whenever a charged particle is moving under the simultaneous effect of electric field and magnetic field, then Simultaneous. simultaneous effect of electric and magnetic field, then the total force experienced by charged particle, then the total force experienced by the charged particle is known as Lorentz force. Charged particle is known as Lorentz force. Charged particle is known as Lorentz force. मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड है प्लस मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ऐड होगा. Lorentz force. Understand this. Now write down, when the charged particle is moving in electric field, write down, when the charged particle is moving in electric field, when the charged particle is moving in electric field, the electric force is given by Fe is equal QE. अरे इलेक्ट्रिक फोर्स है ये. The electric force is given by Fe is equal QE. Fe is equal QE. Write down, when the same charged particle is moving in magnetic field, write down, when the same charged particle is moving in magnetic field, then the magnetic force is given by Fm is equal Q into V cross B. Therefore, Lorentz force is given by, what is the Lorentz force there? F is equal Fe plus Fm. FEA Q into E plus Q into V cross B. This is what the Lorentz force. Lorentz force is what? The total force on the charged particle whenever the charged particle is moving under the simultaneous effect of electric and magnetic field. दोनों फील्ड के अंदर जाएगा ये. That is known as Lorentz force. That is the Lorentz force. अरे समझ में है? हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है? Yes sir. ओके. अरे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया. ओके. बारिश से बहुत जबरदस्त क्लाउड हो रहा है. तो F इक्वल टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B लिख दिए सभी? Yes sir. Now, work done by Lorentz force is how much? Write down. ये भी एक interesting phenomenon we will get. लिखो, work done by Lorentz force. Write down. Work done by Lorentz force. Let dl be the small displacement. Due to Lorentz force. F.
let dl be the small displacement due to Lorentz force F, then work done is given by dw is equal f dot dl. Then work done is given by f dot dl. मेरा f क्या है? f है qe plus q into v cross b dot dl. Try to understand this. ये expression समझने के लिए कोशिश करो. This is what qe dot dl. qe dot dl plus q into v cross b dot dl. This is what dw. Write down. dw is equal, write down, qe dot dl plus q into v cross b dot dl. Clear? देखते हैं 11th क्लास किसको याद है. टेस्ट थोड़ा करते हैं. हो गया? लिख दिए सभी? हेलो, अरे लिख दिए सभी? Yes, sir. ओके. Yes. अभी देखो, E एंड DL के बीच में एंगल क्या आएगा? थीटा. EDL cos थीटा आएगा. नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड DL? अरे डॉट किसके बीच में डॉट है? V क्रॉस B एंड DL. V क्रॉस B एंड DL के बीच में एंगल कितना होगा? कोई बता पाएगा? Sin theta. साइन थीटा. अरे E एंड DL के बीच में एंगल थीटा है. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन B क्रॉस B एंड DL? व्हाट इज द एंगल? कितना आएगा? V और DL के बीच में एंगल कितना आएगा? अरे V एंड DL के बीच में एंगल कितना आएगा? वेलोसिटी जिस तरफ है, देखो वेलोसिटी जिस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ जाएगा DL. एंगल 0 है. बट मेरा B इधर है, B एंड B के बीच में एंगल थीटा है. बट V क्रॉस B के बीच में एंगल कितना है? अरे V क्रॉस B एंड V के बीच में एंगल कितना है? V क्रॉस B एंड V के बीच में एंगल कितना है? बोलो. अरे V क्रॉस B एंड V के बीच में एंगल कितना है? कोई तो बताओ. 90 degree. दैट इज 90 डिग्री. अरे V क्रॉस B एंड V के बीच में कितना है? 90 डिग्री. बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. अरे इफ यू राइट A क्रॉस B is equal AB sin theta, A cross B is perpendicular to A as well as perpendicular to B. अरे बहुत जगह पे किए थे. tau is equal P cross E, tau is perpendicular to P and E. अभी किए थे F equal to Q into V cross B. F is perpendicular to V as well as B. मतलब V cross B is perpendicular to V as well as B. That means B cross B is perpendicular to what? DL. Because V and DL are along the same direction. अरे जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना. तो V इधर है तो DL भी इधर ही होगा. तो V is perpendicular to V cross B. Therefore V cross B is perpendicular to DL. मतलब V cross B is perpendicular to DL. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? स्पंदन बोलो. अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? यस. अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर जल्दी बोलो. Sir, 0 or 1, I don't remember. 0 और 1. अरे दो आंसर है. अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? संपूर्ण बोलो. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर कितना आएगा? अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है? cos 90. cos 90 इज व्हाट? 0. अरे 0 आएगा ना, ये पूरा 0 आएगा. लिखो. अरे क्या 11 भूल गए. लिखो as V cross B is perpendicular to V, therefore V cross B is also perpendicular to DL, therefore V cross B dot DL is 0 because dot product of two orthogonal vector is 0. हो गया? लिख दिया? Sir, I cannot understand.
and why it is 90 degree between V and V What? cross V. B cross B and V is 90 degree. Why? Because you see that B idhar hai, B idhar hai, B cross B is perpendicular to the plane containing both the vectors. Arey A cross B is perpendicular to plane containing both the vectors na? Cross product of two vectors. Yes, sir. Yes, sir. As Yes, it sir. is perpendicular to the plane containing both the vectors, therefore V cross B is perpendicular to V as well as perpendicular to B na? V cross B is perpendicular to V as well as perpendicular to B आएगा. अरे समझ में आ Yes, रहा sir. है? DL. Yes, sir. What? And B cross B is perpendicular to V means B cross B is perpendicular to DL as well. Clear? Understand this? Therefore, V cross B is perpendicular to DL. So V cross B dot DL is what? 0. Is it clear? Yes, अरे sir. समझ में है? या डाउट है फिर भी? Is it clear? Now dW is equal how much? dW is equal Sir, 1 minute. 1 minute. yes QE dot DL. dW is equal QE dot DL. That means who is doing work in Lorentz force? Tell me. In Lorentz force, who is doing work? In Electrostatic Lorentz force, force. who is doing work? Electrostatic force is doing work. Clear? So magnetic field does no work. वो आइडियल है. मैग्नेटिक फील्ड सबसे आलसी है लॉरेंस फोर्स में, कुछ काम का चीज नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स सब काम इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा. अगर दो फोर्स है, दो फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग वर्क, नो मैग्नेटिक फील्ड इज डूइंग वर्क. क्लियर? राइट डाउन. Hence in Lorentz force, write down. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन गिरता है ये, लिखो. Hence in Lorentz force, electric field is doing work. Electric field is doing work. Electric field is doing work, while magnetic field does no work. 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 Clear? Next is velocity selector. Velocity selector क्या है? Write down. Velocity The selector. last slide. Yes. So here magnetic field does no work. Always electric field is doing work. Magnetic field It's a does little no bit work. up. Sir, up. Yes. Okay. Yes, sir. Completed? Yes, sir. Completed? Yes, Now, sir. velocity selector. Velocity selector, or write down motion of a charge in perpendicular magnetic and electric field, or motion of a charge perpendicular to what? Electric and magnetic field. Perpendicular to electric and magnetic field. Magnetic field. लिखो magnetic field. Clear? Same thing. Let's see this. Velocity selector or motion of a charged particle to electric and magnetic field. अरे ये जो बच्चे ये इस साल का काफी शायद तपस्या किए थे, समझ में आया? इसलिए बिना एग्जाम देके 90% रख लिए. ये शायद सभी का किस्मत में ऐसे नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड दिस और नॉट? अरे बिना समझ के जो एवरेज स्टूडेंट है उनका तो लग गया. किसका पुण्य किया? क्या बोलो?